So good morning to all friends from media. The Commission welcome members of print and electronic media to the press meet convened by the Election Commission of India. Full Commission comprising of my fellow commissioners Mr. Jyoti and Mr. O.P. Rawat are here to announce the schedule for general election to the Legislative Assembly of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh. As you are aware, before we announce the schedule, we would like to brief the House with regard to certain highlights of the upcoming general elections. You are aware that term of legislative assemblies to these 5 states are expiring as follows, and I will read. Goa, 18th March 2017, Manipur, 18th March 2017, Punjab, 18th March 2017, Uttarakhand, 26th March 2017, and Uttar Pradesh, 27th May 2017. The Commission under powers and functions under Article 324 read with Article 172 subclause 1 of the Constitution of India and Section 15 of the RP Act is mandated to constitute the assembly of these 5 states before the expiry of their terms. Thirdly, the Commission has a established practice that when the terms of the assemblies are expiring around the same time, the elections are held together, and therefore the Commission follow this practice. I would also like to share on behalf of the Commission some facts and figures. The number of assembly constituencies state-wise is contained in the announcement note. There are 690 legislative assemblies which will go to poll, and there are 133 assemblies out of these reserved for scheduled castes, and 23 seats are reserved for scheduled tribes as per the delimitation order of 2008. Then we would like to share with you the details about our electoral rolls. The Commission believes that pure and updated electoral rolls are essential for free, fair and credible elections, and therefore in past 1 year the Election Commission has been endeavouring to purify electoral rolls. National Electoral Roll Purification Program was launched in 2016, and millions of errors, multiple entries, dead voters have been removed from the electoral rolls. Date of publication of our final electoral roll after summary revision will take place as follows, which I would like to share with the media. Electoral roll of Goa will be published on 5th January, Manipur on 12th January, Punjab 5th January, Uttarakhand 10th January and Uttar Pradesh on 12th January. Over 16 crores, over 160 million voters are going to participate in these elections. That is the size of the task. Nearly 100% voters have electoral photo I card. New voters who are being added to the electoral roll will also be issued elector photo I card in time-bound manner. Identification of voters at polling stations will be mandatory. Commission will distribute photo voter slips to all voters. The size, format and design of the photo voter slip has further been improved. There will be complete accounting
and accountability of distribution of photo voter slips. This time Commission has taken another initiative, that colorful voter guide will be distributed along with photo voter slip to each family, and this voter guide will contain information about the polling stations, about date and time of the polling, about the identification documents that can be used, and do's and don'ts for voters. Now coming to the polling stations, a total number of 1,85,000 polling stations will be covered under operations, and this number has increased by about 15% as compared to 2012, and this has been done from the viewpoint of facilitation to voters. All polling stations will have assured minimum facilities. There will be some model polling stations also. The Commission has also introduced a new initiative, that at every polling station four number of voter facilitation posters will be prominently displayed, and this is a statutory requirement also. These posters will be uniform and standardized by displaying the area of the polling booth and list of IDs that can be used at the polling station. The voting procedure will also be displayed outside the polling booth, polling station, and certain prohibited items will also be displayed, and do's and don'ts for voters to facilitate them. Another initiative of the Commission is that outside every polling station location, earlier there used to be wherever there were more than 3 polling booths, but this time Commission has decided that at every polling station location there will be a voter assistance booth which will be manned by election personnel, and they will further assist the voters who may not be possessing their photo voter slip. Another initiative the Commission has undertaken is the height of the voting compartment. There used to be complaints that movement of heads and also the body of the voter can be seen, and thereby secrecy was being violated. Therefore the Commission has raised the height of the compartment to 30 inch for secrecy, and they would be of uniform size, of flex material and steel grey size. In some parts of the country where women, as per the local custom or social practice, don't mingle with men, we have directed Chief Electoral Officers to set up separate polling stations for women. Election Commission also encourages participation of women in the management of the electoral process, and therefore all women managed polling stations will also be set up. This year the Commission will lay great emphasis in making the entire electoral process PWD friendly, persons with disability friendly, and to further enhance this, polling station wise mapping of such persons has been carried out so that there can be targeted and need based facilitation in terms of wheelchairs and other things. Electronic voting machines will be used in all states. There is a complete security and transparency in the storage, transportation, first level check and mock poll. As you know, there is a symbol provided at the bottom of the electronic voting machines after the last candidate for nota, none of the above. VVPAT machines will be used in increasing number in certain identified legislative assembly constituencies. Commission has decided that Goa state will be saturated with VVPAT,
VVPAT is voter verifiable paper audit trail, where the voter can see his vote or her vote where it has gone. Commission is also launching awareness program in each of these constituencies. The number of VVPAT constituencies will be further increased as our supplies start flowing from our manufacturer, and which will commence in this month only, in next 1 or 2 weeks. Ballot paper on electronic voting machines will have the photo of candidates. This is a new feature for these states. Now friends, there is a historic first step in Indian electoral process. Election Commission of India is joining the rank of global leaders in the area of electronic transmission of votes to our service voters, which comprise of defense, central paramilitary forces, and persons who are posted in our missions. And therefore postal ballot to service voters will be transmitted electronically one way in certain identified legislative assembly constituencies. You are already aware that the first experiment was conducted in Puducherry in the month of November, and it was done successfully. Now coming to candidates, the Commission would like to share some important initiatives with regard to their transparency and election expenses. In addition to filing the affidavit in compliance of the order of the Honorable Supreme Court, there is another additional affidavit in compliance of another order of the Honorable High Court of Delhi, where candidates will be required to file a no demand certificate, and this no demand certificate will come from agencies such as dealing with electricity, water, telephone, and also the rent of the government accommodations which these candidates may have occupied in past 10 years. And the Commission would like to make it clear that failure to file this additional affidavit will be a defect of substantial nature, inviting scrutiny by the returning officer. Rules have also been changed, where candidate will be required to affix photo on nomination paper. Candidate will also be required to make a declaration that he is a citizen of India and has not acquired foreign citizenship. Now our model code of conduct comes into effect with immediate effect as we are speaking. This will apply to candidates, political parties, state governments. It will also apply to the central government insofar as their announcements and policy decisions pertain to for these states. Commission is determined to ensure strict compliance along with uniform application to all political parties, ruling or opposition. And Commission will also invoke provisions of substantive laws while enforcing model code of conduct. This time Commission has issued special operating procedures for first 72 hours after announcement and the last 72 hours. For first 72 hours after announcement, there is a need for our election machinery to get into swift mode, activated mode, to start implementing model code of conduct. In the last 72 hours of the entire process, you are aware there are complaints of malpractices, and therefore there is a special standard operating procedure which has been laid down by the Commission, and it will be monitored very strictly. The Commission also lays emphasis on promotion of environment friendly practices, and therefore Commission expects all political parties and all candidates to discourage use of environmentally hazardous material such as plastic in their campaign. This time Commission is very concerned that noise pollution by way of reckless, widespread and flagrant use of loudspeakers will be discouraged, because it disturbs general public, it disturbs
students, it disturbs patients, etc. And as usual, there will be no use of loudspeaker between 10 p.m. to 6 a.m. Police and election authorities will clamp down on this aspect. Law and order, we are committed to conduct elections in a free and fair manner. Adequate central police forces will be deployed along with local police for confidence building measures. They will be deployed in advance. There would be area domination, route marches in vulnerable pockets to build faith in the minds of voters. Deployment of central paramilitary forces will be under the oversight of central observers and with their approval. Election Commission has already started monitoring preventive actions prior to announcement, and now we will start monitoring more strictly. Commission is committed to provide protection to members of scheduled caste and scheduled tribe. Wherever needed, provisions of Scheduled Caste Prevention of Atrocities Act will also be invoked. The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand, and 20 lakhs for Manipur and Goa. Again, Election Commission is committed to control misuse of black money, cash, 20 lakhs, cash, liquor, gift and drugs will be controlled. There will be elaborate expenditure monitoring mechanism in place, our surveillance teams, our flying squads, and there will be complete enforcement of our enforcement agencies. There will be complete coordination. Some new initiatives have also been introduced which we would like to share for information. Number one, booth or kiosk, or in common parlance basta, which are set up by the candidates outside polling stations will be deemed to have been set up by candidates, and entire expenditure on these kiosks will be included in the election expense of candidates. Our district election authorities will lay down rates, and our expenditure returns have also been modified accordingly. Secondly, candidates will be required to open accounts in their banks, and as per our directions, expenses above rupees 20,000 will be made out of this bank account and will be through check. Similarly, our existing instructions are being reiterated, where donations and loans to be received by candidates greater than 20,000 rupees will be by way of check or draft. Political parties will be required to file their party statement as far as expenses on candidates is concerned within 30 days of declaration of results, and final accounts by the political parties within 75 days. Media is a friend of Election Commission of India, and we are very proud of it. And therefore, our entire machinery from Election Commission down to the lowest level will be positively engaged and interacting with entire media. We will keep you briefed about our activities, and we will also be very swift in our action and in our response to the news which will be carried by our media. Election Commission has encouraged use of social media. All our COs, all our district election officers are using social media. They have their YouTube, Twitter, Facebook accounts. Election Commission also has a social media cell here. Paid news will be another area which Commission will focus. Press Council of India has nominated members, and we are very thankful to the Press Council, and they will be assisting the Commission in detection and determination of paid news. This time Commission is issuing another set of instructions. You might be aware that there are
some TV channels owned by political parties or candidates, and these TV channels carry out huge publicity of candidates, and they go unnoticed, unaccounted for, and therefore Commission has issued the instructions that our media monitoring committee at district level will monitor whether these TV channels owned by political parties or candidates are carrying out publicity of their candidates, and such expenses will be included in the expenses of candidates. Commission is committed to achieve higher percentages of voter turnout, and therefore our sweep campaign, voter education program, would be launched more vigorously. Another interesting feature is that the Commission has launched a large number of IT applications to facilitate voters, candidates, political parties, citizens, civil society organization and public spirited persons. There would be observers, general observers, police observers, expenditure observers and awareness observers. Commission has ensured the implementation of its transfer policy, and all police and election related officers have been posted as per our transfer policy. However, wherever required, wherever Election Commission feel that officials are acting in a biased manner or in partial manner, the Commission will take necessary action. Commission will ensure level playing field for inclusive, free and fair election by curbing muscle power and also controlling abuse of money. Commission seek cooperation from all voters, from political parties, from candidates, from civil society organizations for compliance of our instructions. The Commission call upon voters to participate in the upcoming elections in an ethical manner and cooperate with ECI. At this moment, Commission would also like to thank all state governments, Chief Electoral Officers, Chief Secretaries, Director General, Ministry of Home Affairs, our Central Paramilitary Forces, enforcement agencies and all the officials of the Commission who have assisted the Commission in scheduling and planning of elections. In past 2-3 days, the Commission has been engaged in hectic meetings with all concerned who are involved in the scheduling and planning of election activities, and yesterday evening the Commission has reached the conclusion that our state machineries are in full state of readiness, and therefore we have great pleasure in announcing the schedule to these 5 states, and therefore the Commission would like to share with you the schedule of election to these states. As I mentioned that the Commission generally holds election to the assemblies whose term are expiring together or nearby, and these elections are held together, and therefore all 5 states will go to elections at one go. सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे. मैं आपके सामने पहले गोवा का शेड्यूल पेश करूंगा कमीशन की ओर से. गोवा में डेट ऑफ नोटिफिकेशन 11 जनवरी वेडनेसडे. लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस इन गोवा 18th January 2017 Wednesday. Scrutiny of nominations will be completed by 19th January Thursday. Withdrawal of candidature by 21st January Saturday. गोवा में चुनाव की तिथि 4 फरवरी 2017 सैटरडे. डेट ऑफ काउंटिंग पे बाद में आएंगे. थोड़ी देर आप लोग
जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट मोर टाइम। हाँ, इसके बाद हम पंजाब राज्य पे आते हैं। पंजाब राज्य का नोटिफिकेशन 11 जनवरी 2017 को होगा। 11 जनवरी 2017 को पंजाब राज्य का नोटिफिकेशन होगा और बुधवार पंजाब राज्य में लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 18 जनवरी 2017 बुधवार। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पंजाब में 19 जनवरी को बृहस्पतिवार। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 21 जनवरी 2017 शनिवार। और पंजाब राज्य में चुनाव 4 फरवरी 2017 शनिवार के दिन। इसके बाद हम एक और छोटे राज्य में आएंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में 70 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। आपको शायद हमने पहले नहीं बताया है, अभी बता देते हैं कि गोवा राज्य में 40 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं और पंजाब में 117 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। एक चीज और भी बताएंगे कि गोवा में 40 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज का चुनाव सिंगल फेज में होगा। सिंगल फेज in all 40 constituencies in Goa. In Punjab, election to all 117 assembly constituencies will be held in single phase. Uttarakhand, 70 assembly constituencies, election single phase में conduct कराया जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 जनवरी, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 जनवरी शुक्रवार। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन इन उत्तराखंड 27 जनवरी 2017 शुक्रवार। नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी 28 जनवरी शनिवार। कैंडिडेट्स का विड्रॉल 30 जनवरी सोमवार। उत्तराखंड में सिंगल फेज में पोल 15 फरवरी को होगा, 15 फरवरी को होगा और बुधवार के दिन। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट पे आते हैं, मणिपुर में। मणिपुर में कुल 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं और यहां पर चुनाव 2 फेज में कराया जाएगा। मैं फेज वार आपके सामने पेश करूंगा। The phase 1 of Manipur will comprise of 38 assembly constituencies. 38 assembly constituencies. The list is given in the press note. You can please go through it. You can kindly go through it. Date of notification for phase 1 in Manipur will be on 8th February 2017, Wednesday. Last date of making nominations to first phase 15th February Wednesday. Scrutiny of nominations 16th February Thursday. Withdrawal of candidature 18th February Saturday. And date of poll of first phase is 4th March Saturday. 4th March Saturday. 38. 38. Now coming to phase 2 of Manipur, comprising of 22 assembly constituencies. Again, the list of assembly constituencies is contained in the press note. Date of notification will be 11th February Saturday, phase 2. Last date of making nominations 18th February Saturday. Scrutiny of nominations
20th February, Monday. Withdrawal of candidature, 22nd February, Wednesday. And date of poll, 8th March. 8th March is the date of poll for second phase, 22 assembly constituencies. Now we come back to the largest state, Uttar Pradesh. 8th March. So, elections to the 403 assembly constituencies of UP, उत्तर प्रदेश 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। अब हम फेज वाइज आपके और हमारे वोटर्स की जानकारी के लिए आपके सामने पढ़ेंगे। पहला फेज 73 कंस्टिट्यूएंसीज, 73 कंस्टिट्यूएंसीज, जिसमें 15 जिले शामिल होंगे। इन जिलों के नाम भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सिंपल हैं। उत्तर प्रदेश के फेज 1 के जिले शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस। अच्छा, आई थॉट यू वर वेरी फास्ट। कहां तक नोट किया आप लोगों ने? I will read it again, please. रहने दें? ओके। तो फेज 1 का नोटिफिकेशन 17 जनवरी को, 17 जनवरी फेज 1। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 24 जनवरी 2017 ट्यूसडे। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 25 जनवरी 2017 और कैंडिडेट्स का विड्रॉल 27 जनवरी। और फेज 1 में डेट ऑफ पोल 11 फरवरी। अब इसके बाद फेज 2 में आते हैं। फेज 2 में 67 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, 67 और इसमें 11 जिले शामिल हैं। इस फेज के लिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 जनवरी को होगा, 20 जनवरी। और नॉमिनेशन की लास्ट डेट होगी 27 जनवरी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 28 जनवरी और कैंडिडेट का विड्रॉल 30 जनवरी और यहां पर पोल 15 फरवरी। फेज 2 में पोल 15 फरवरी। मैं मोटा मोटा आपको बता दूंगा। इस फेज 2 में वो जिले शामिल होंगे जो उत्तराखंड से बॉर्डरिंग है, वेस्टर्न, जैसे आपके ये सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं तक। इसके बाद फेज 3 में आते हैं। इसमें फेज 3 में 69 कंस्टिट्यूएंसीज, 69 कंस्टिट्यूएंसीज और इसकी डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24 जनवरी है, ट्यूसडे का दिन है। नॉमिनेशन का लास्ट डेट 31 जनवरी है। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 2 फरवरी है। कैंडिडेट का विड्रॉल 4 फरवरी है। हाँ, अच्छा, मैं रिपीट करता हूं, जस्ट 1 मिनट। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 24 जनवरी, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 31 जनवरी
नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 2 फरवरी और कैंडिडेट्स का विड्रॉल 4 फरवरी। अभी आते हैं। इसमें जिले 12 जिले शामिल हैं और इसमें जो नाम है मोटे मोटे मैं पढ़ देता हूं, जैसे हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर। पूरे नहीं पढ़े हैं लेकिन 12 जिले शामिल हैं। आते हैं। असेंबली सीट फेज 3 में 69। 24 जनवरी को नोटिफिकेशन होगा, ये तो पढ़ दिया हमने। डेट ऑफ पोल 19 फरवरी। अब फेज 4 की बात करेंगे तो फेज 4 में 53 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 53 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और इसमें 12 जिले शामिल हैं और ये जिले मोटे मोटे तौर पर प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बुंदेलखंड के एरियाज हैं, रायबरेली, फतेहपुर वगैरह। और इसका नोटिफिकेशन 30 जनवरी को होगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 6 फरवरी होगी। स्क्रूटनी 7 फरवरी को होगी। विड्रॉल 9 फरवरी को होगा। इसकी डेट ऑफ पोल 23 फरवरी, 23 फरवरी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 53। ओह सॉरी, 12। पोलिंग डेट है इसकी 23 फरवरी। विड्रॉल की डेट है 9 फरवरी। 23 फरवरी। नाउ कमिंग टू फेज 5। फेज 5 में 52 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। 52 कंस्टिट्यूएंसीज और इसमें 11 जिले हैं और मोटे मोटे तौर पर इसमें बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अमेठी और सुल्तानपुर। ये फेज 5 है और फेज 5 का नोटिफिकेशन 2 फरवरी को होगा। नॉमिनेशन की लास्ट डेट 9 फरवरी होगी। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 11 फरवरी को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 9 फरवरी, स्क्रूटनी 11 फरवरी और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 13 फरवरी। और इसकी जो पोलिंग की तिथि है वो 27 फरवरी, 27 फरवरी। नाउ वी कम टू फेज 6। फेज 6 में 49 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं और इसमें 7 जिले शामिल हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड और ये जिले हैं जैसे महाराजनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया। इनका नोटिफिकेशन 8 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। स्क्रूटनी 16 फरवरी को होगी। कैंडिडेट्स का विड्रॉल 18 फरवरी तक होगा और यहां पर पोल 4 मार्च को किए जाएंगे, 4 मार्च। और जो लास्ट फेज है फेज 7, इसमें हमारी 40 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और इसमें जिले 7 शामिल हैं और ये 7 जिले मोटे मोटे तौर पर गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र और जौनपुर। इन 7वें फेज के लिए 11 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा। 18 फरवरी तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन की और स्क्रूटनी 20 फरवरी को होगी। विड्रॉल 22 फरवरी तक होगा और इसका पोल 8 मार्च को संपन्न किया जाएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 7, 8 मार्च को। Has everybody noted, please? And therefore, after completion of polling in all states,
as described before you, the counting will take place on 11th March, Saturday. 11th March, Saturday. सर 11th मार्च को सारे राज्यों की काउंटिंग एक साथ की जाएगी. जस्ट 1 मिनट. तो ये इंफॉर्मेशन सबने नोट करी. And therefore the commission would like to thank the media from print and electronic for their wonderful cooperation before, now and in future. Thank you very much. सर समाजवादी पार्टी सर एक मिनट सर भाई मदद राजेश दे. सर, चुनाव की घोषणा के साथ ही विवादक आम आदमी पार्टी ने बोला कि गोवा और पंजाब में एक साथ इलेक्शन करा के और आपने उनके लिए छापा कर दिया क्योंकि वो दोनों जगह एक साथ ध्यान नहीं दे सकते. समाजवादी पार्टी ये जो शेड्यूल कमीशन ने बनाया है, ये सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करके बनाया गया है और कमीशन की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स इश्यूज भी हैं, जिसमें खास तौर पर हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का इंडक्शन, उनका मूवमेंट इत्यादि को ध्यान में रखना पड़ता है. और कमीशन ने ये अपने प्रॉपर डिलीजेंस, कंसल्टेशन और जस्टिफिकेशन के बाद गोवा और पंजाब का इलेक्शन एक दिन किया है. और हम ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई करता है, सारे वोटर्स पे अप्लाई करता है और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज से सहयोग की अपेक्षा करते हैं. भारती situation in Manipur is, according to the Home Ministry, may not be conducive for holding a free and fair poll in certain districts. What is your view on this? Commission in past few days has undertaken extensive consultation with all stakeholders, which includes Ministry of Home Affairs, State Government, Police Forces, Chief Electoral Officer of the state, and various other inputs that could be available to the Commission. The Commission, after extensive consultation and due diligence, has reached a conclusion that the Commission is in a position to conduct the election in the state of Manipur, and therefore the Commission would like to appeal all political parties, all people of Manipur state to cooperate with the Commission in the conduct of free and fair elections. सीसी साहब, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से जारी हो गया, 1 तारीख को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने वाली है. क्या सर ये बजट पेश किया जा सकता है क्योंकि पूरे देश पे इसका असर होगा, या आप अपील करेंगे कि इसको डिफर किया जाए? See, the Commission has received one representation, as you might have read in the public domain, sent by some political parties, and this representation is with regard to presentation of the budget. The Commission is examining this representation, and in due course of time will take an appropriate call on this. सर जैदी सर, समाजवादी पार्टी का मामला आप लोग के पास है, क्या विकल्प होगा अगर समाजवादी पार्टी खुद से अपने मामले को नहीं सुलझा पाते तो चुनाव आयोग के सामने क्या विकल्प है? दूसरा सवाल यह है कि नोटबंदी का मसला राजनीतिक दलों के बीच कहा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा होगा. आप लोग काले धन पे रोक की बात करते हैं, क्या नोटबंदी से काले धन में आने वाले चुनाव में रोक लगाने में मदद मिलेगी? आपका जो पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के विवाद के बारे में, पिछले 2-3 दिन में हमारे पास प्रत्यावेदन आए हैं दोनों समूहों की तरफ से, एक श्री मुलायम सिंह जी की ओर से और दूसरा श्री राम गोपाल यादव एंड श्री अखिलेश यादव जी की ओर से. कल शाम श्री राम गोपाल यादव की ओर से
एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा डिटेल हमारे कमीशन में प्रस्तुत किया गया है। कमीशन सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत पुराने प्रेसिडेंट्स को ध्यान में रख करके और निर्धारित प्रक्रिया जो हमेशा से फॉलो की गई कमीशन में, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने पेश किए गए हैं उसका परीक्षण करेंगे, एग्जामिन करेंगे और उस पर उचित निर्णय उचित समय पर लेंगे। सर उसके परीक्षण में तो काफी समय लगे। हाँ, आपने जो प्रश्न उठाया है, हाँ, काले धन वाला, अब हम इस आने वाले इलेक्शन में जो आज से प्रारंभ हुआ है, हम कमीशन और हमारी सारी मशीनरी इस बात को जरूर देखेगी कि नोटबंदी से हमारे काले धन के ऊपर नियंत्रण लगाने में कैसे कैसे मेजर्स उठाने पड़ेंगे। इतना अवश्य है कि जैसा सूचना हम लोगों के पास आ रही है कि काले धन की उपलब्धता इस बार के आने वाले इलेक्शंस में कम होने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन होगा हम इसको डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर करेंगे। मगर जैसा हमारे सहयोगियों ने भी पहले कहा है कि काले धन की कमी होने के कारण अन्य प्रकार की वस्तुओं के वितरण की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, तो कमीशन उस पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन में हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि हमारे ये काले धन नोटबंदी के वजह से हमारे काले धन के नियंत्रण पर कितना प्रभाव लग पाएगा, मगर हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये इसको इम्प्लीमेंट करने में। सर, समाजवादी पार्टी का विवाद में वापस पूछना चाहता हूं, जो पूरा चुनाव प्रोसेस आपने ऐलान कर दिया है, ऐसे में जो चुनाव का अगर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करते हैं आप, तब क्या विकल्प रहेंगे आपके पास? नहीं, अभी तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हम जब्त करें न करें। अभी हमारे सामने डॉक्यूमेंट आए हैं, उसको परीक्षण करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जाति और धर्म का रोल का इस्तेमाल होता है चुनाव में। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका वोट लगने चुनाव आयोग की क्या तैयारी और क्या इस तरह का कुछ होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का क्या प्रावधान है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है। हमारा आयोग के जो लॉ डिपार्टमेंट हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं। जो इस आदेश में कहा गया है वो ये है कि अगर धर्म, जाति, समुदाय आदि के नाम पर कैंडिडेट या उनके एजेंट या उनके सपोर्टर्स वोट मांगते हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। जस्ट वन मिनट। इलेक्शन कमीशन कमिटेड है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और जो भी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उसका एप्लीकेशन किया जाएगा। और हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट से भी ये अपेक्षा करते हैं और ये तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करें। I have mentioned to you. There are some parties down south whose name itself has an invocation to a caste movement. Can you take any action on those parties or on those names? See, Commission has taken a decision since 2005 that no political party can be registered with these kinds of names. Sir, two things. One is that what is the official rule laid out for presentation of budget during when an election process is going on? And number two, another concern which political parties had was that these dates will be too close to the budget session. So campaigning could be a problem. Budget session, the first part ends on 10th and UP elections begin on 11th. So how do you see that? We have taken all factors into account and our election process will run. Sir, we'll ask the same question. Supplementary to this question, for instance, yesterday when Mayawati was announcing tickets, she kind of gave the classification, easy tickets, Dalito ko gayi hai, isme Musliman ko gayi hai. So as and when parties will announce their candidates, if they make such announcement that we have given so many tickets to certain groups, religious groups, minorities, will that be covered under this
अब जैसे जैसे ऐसे मामले आएंगे इसके आदेश के बाद उनको देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद। Sir, Supreme Court judgment comes into effect only when one person is elected, which is he has no role because RP Act is very clear. Second point, there is a charge and allegation against the Election Commission saying that the Election Commission delayed the dates till 4 so that Prime Minister can attend his rally in Kashmir. I think this is in the realm of conjecture. The Election Commission of India historically has its own mind. Election Commission of India is an independent institution, is an autonomous institution set up under the Constitution of India. And the Election Commission of India has always behaved independently. Even this time, the Election Commission of India has left no stone unturned in making last minute preparations. As you would be aware, the Election Commission started making preparations for the past 6 months. We began our process in July, but in any preparation there are always loose ends which have to be tied up, and elections cannot afford any deficiency, any shortcoming, any loose end. And therefore you would also be aware that in past couple of days, particularly in past 3-4 days, we have held extensive and intensive consultation with Ministry of Home Affairs, our Railway Board for Movement of Forces, with all our Chief Electoral Officers yesterday, with all nodal officers of the police of these 5 states yesterday. Secondly, when we were visiting states, we were requested by some political parties that the election should, as far as be possible, be held after Christmas and after New Year. And as I mentioned, there is a established practice that elections are held together, whose terms are expiring together. And it is only last evening that the Commission, as an independent body, as an autonomous body, was reached the conclusion, including the issue of law and order in Manipur, that the situation has reached a state when the entire election machinery in all 5 states are in a ready state of preparation and we can go ahead. And that is how we are making the elections today. Sir, my first question is... My question is, in the 2014 elections, you took action on certain campaigners, you stopped them from allowing them to go ahead and campaign because of these very bases that have been referred to as far as Supreme Court judgment is concerned. So what has been on ground? Has this judgment given you any further powers, or are the penal provisions going to remain the same as far as the Election Commission is concerned? Because one major concern is that the Election Commission's own powers are very limited. See, our Model Code of Conduct has provisions, and as I mentioned in the press conference a little while ago, that we will invoke substantive laws also along with the provision of the Model Code of Conduct. Now with the pronouncement of this order of the Honorable Supreme Court, the hands of the election machinery will be further strengthened, and the most important thing is that asking for votes in the name of these categories like religion, caste, etc. will invite the provisions of Section 123 of the RP Act, which means that this will be deemed to be a corrupt practice, and therefore all candidates, all their agents, all their party workers have to be doubly careful, because if they make use of this, our election machinery will come down heavily under the framework of law. Sir, excuse sir, when you will declare the by-elections of RK Nagar constituency in Tamil Nadu and Nanjangoodu? Please repeat it. When you will declare the by-elections of RK Nagar assembly constituencies in Tamil Nadu and Nanjangoodu assembly constituencies in Karnataka, both constituencies are vacant now. We will take a call on that. We take note of it. सर इसी के साथ ही जुड़ा हुआ सवाल है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, लगातार आतंकवादी हमले होते रहे, उसको लेके कोई खास तैयारी की गई है इलेक्शन की तरफ से? देखिए, इलेक्शन कमीशन पिछले कई महीने से पंजाब के स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं,
और हमने काफ़ी मीटिंग वहाँ पर करी है, उनके अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करी है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी करी है। जो इश्यूज आपने उठाए हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के और गैंगस्टर्स वगैरह के, ये सब इश्यूज कमीशन के संज्ञान में हैं एंड वी हैव इवॉल्व्ड ए डेफिनेट रॉबस्ट स्ट्रेटजी which the commission has evolved in consultation with the state authorities and all the agencies involved in this process. That strategy was divided into two parts. The one was pre-announcement and lot of action has been taken in the run up to the announcement. और अब announcement करने के बाद जो हमारी रणनीति है वो और प्रभावी ढंग से हम उसको implement करेंगे, लेकिन उस रणनीति के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिसको हम पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहेंगे। उसको ध्यान में रखते हैं, अब उसको भी शेड्यूलिंग बनाएंगे। सर, जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के दोनों ग्रुप से आपको प्रतिवेदन मिला है, कई सौ पेजेस के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो उसको फाइनलाइज करने में, तय करने में, फैसला करने में बहुत लंबा समय लगेगा। कुछ आप समय सीमा देंगे कि क्या नहीं, साथ ही दोनों ग्रुप को अगर नए सिंबल देने तो नहीं, समय सीमा निश्चित करना मुश्किल है। सर, नोटिफिकेशन में अभी उसका प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है, हालांकि सवाल दो बार हो चुका, लेकिन आपने एक विभाग से दो बार एक अंग्रेजी जवाब दिया और पांचों राज्य जो है हिंदी बहुत बात है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि आपने शुरुआत में अपना कहा था कि मॉडल कंडक्ट लगाने के बाद अब आपको कोई भी सरकारी घोषणाएं नहीं हो सकती, अब सरकार बजट लेकर आने को है। ऐसे में आपका इलेक्शन कमीशन का मॉडल ऑफ जो पूरा बजट है वो कितना सक्षम रह पाएगा और क्या आप सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो आगे बढ़ाए इस बजट से? नहीं, देखिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के रेस्पॉन्स में कहा था कि हमारे पास एक प्रत्यावेदन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आया हुआ है जिसमें उन्होंने इस दिशा में कमीशन से कहा है। कमीशन के कुछ पूर्व दृष्टांत वगैरह हैं, तो हम अभी उस प्रत्यावेदन का परीक्षण करेंगे और कमीशन की स्टैब्लिश प्रैक्टिस के हिसाब से जो उसमें उचित पाया जाएगा उसको आने वाले समय में उस पर विचार करेंगे। सर, गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे वांट कैशलेस ट्रांजैक्शंस and they are claiming a very high rate of digital thing. So why have you kept this 20,000 rupees for check? Why not completely by digital? The commission is also mulling over these thoughts, and at this point in time, as on today, the commission cannot comment on this as far as our electoral process is concerned, but a time may come when we will also have to. You might modify this, sir? Are you suggesting you might modify this 20,000 rupees thing to zero? No, actually I couldn't get your question clearly. Sir, you want digital comment or you want 20,000 limit comment? I mean 20,000 as an example for the total digital transactions that the government wants. Why can't they? Yes. So, as you would know, and as the commission has already articulated, that the commission is in favor of reducing the limit of anonymous donation. You know, at present only amount which are beyond 20,000 are required to be disclosed. Any amount below 20,000 need not be disclosed to the income tax authority and to the commission. Therefore, commission has already gone on record recommending for law making that this limit should be reduced to rupees 2,000 only. And also the commission is internally mulling over this fact whether we could go over, whether we could switch over to digital payments, check payments, draft payment. So there are many options. We cannot confine to only one option. This is all under our consideration, but we are on record that this limit of 20,000 rupees should be reduced to rupees 2,000. Thank you, sir. सर, मेरा नाम सैयद बशीर है, मैं प्राइम न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है एक तरीके से और सबसे ज्यादा चुनौतियां होती हैं वहाँ पे चुनाव कराने की। आप लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है सुरक्षा को लेके, देखा अक्सर देखा गया है कि चुनाव अधिकारियों के साथ कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब चीजों के लिए कुछ अलग से और चीजें अपनाई गई? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया, इलेक्शन कमीशन बिना तैयारी के तो उतरता नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारियों के साथ, पूरे प्रबंधन के साथ चुनाव क्षेत्र में आते हैं और हमने उत्तर प्रदेश के बारे में भी बहुत विस्तार से समीक्षा करी। हमारे ऑफिसर्स, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आज ही लौटे हैं करीब 13-14 मंडलों का दौरा करके और जिला पुलिस के अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ। तो हमारे इंतजाम सुरक्षा के भी और शांति व्यवस्था के भी बहुत पुख्ता रहेंगे। ये हम आपको कह सकते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण होंगे।
सर, जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं कि जो लोकल पुलिस है वो बायस होती है कई बार, वैसे में आप सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज ज्यादा करते हैं और उनके बाद उनको ज्यादा इंश्योर करते हैं, क्या आप इस बार भी ऐसा करेंगे? जैसे हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम ग्राउंड सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं और ये भी प्रैक्टिस रही है कि सामान्यतः पोलिंग बूथ पे हम सेंट्रल पुलिस फोर्सेस लगाते हैं और लोकल पुलिस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी हम लोग डिटरमिन करते हैं और ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट केंद्रीय बलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। No, as we mentioned just now that we have a representation, we are examining it, and therefore it will not be possible to comment anything beyond this. सर, जिस तरह से आपने कहा था कि अभी जो पेड न्यूज है, जो टीवी चैनल कुछ पार्टी पोलिटिकल पार्टी ने भी कुछ कैंडिडेट है लोकल लेवल से, तो उस पर चुनाव आयोग किस तरह से इस बार सख्ती बरत रही है, क्योंकि बात कई सालों से हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल, सर्वे, ये सब छोटे छोटे अखबार नहीं, थोड़ा सा आप समझिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन हमने करी है कि अगर कोई टीवी चैनल पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा ऑन किया जाता है और उस चैनल पर कैंडिडेट की पब्लिसिटी की जाती है तो कैंडिडेट की, और उसके लिए उसने धनराशि कुछ नहीं दी है अपने चैनल को, ऐसी स्थिति में जो खर्चा एक स्टैंडर्ड रेट है उसके आधार से इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द कैंडिडेट में वो खर्चा जोड़ा जाएगा। इसके लिए हमारी जनपद स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है जो दिन प्रतिदिन इस पर नजर रखेंगी कि क्या इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। देखिए, एग्जिट पोल लास्ट 48 आवर्स में बैन है, उससे पहले ओपिनियन पोल और उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा नाम प्रतीक श्रीवास्तव है। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार 6 लाख लोग आपको देख रहे हैं। इसके लिए आपकी अच्छा, लेकिन क्या इसके आगे चुनाव आयोग के जो भी कड़े एक्शन होंगे, क्या उनको भी पूरे देश भर के लोग नया मीडिया सोशल मीडिया के जरिए देख सकेंगे ताकि पॉलिटिसिटी ना हो? 6 लाख लोग भी आपको देख रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक, आपका सुझाव अच्छा है और इसको डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन प्रोपगेट अवर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ अवर इंस्ट्रक्शंस। लास्ट क्वेश्चन, you said about the candidates only, TV political parties won't. You said only candidates are voting. If the television channel propagates only the symbol, then where this? No, as our instruction says, you may also kindly go through the instruction. If the TV channel is owned, say by a political party, and a political party has set up candidates, and if their publicity is being made on that channel, then that expense on TV channel will be added to the expense of the candidates. Last one. So in English, considering that Samajwadi Party has made representation to you when we are counting down to 1.5 months before UP elections begin, precedent says that in the past you have frozen symbols. Is that the most likely approach that the election commission will take given the current circumstances? We cannot comment on symbols. We have just received papers and we will examine it.